सो फर्स्ट ऑफ यहाँ पर अपने अपन लोग थे। फर्स्ट थिंग अपने को क्या करना था बोल के बोले तो अपना वर्चुअल बॉक्स खोलना था। एंड वर्चुअल बॉक्स में अपन लोग वीएम बनाना सिखाया था मैं कल अपने को, वर्चुअल मशीन। और ये मैं ये भी बोला था कि अपन लोग क्लोन्स यूज करते हैं, क्यों बोल के बोले तो अपने को मल्टीपल मशीन्स यूज होते ना, तो अपने को क्लोन करते इस वजह से कि अगर करप्ट होगा एक सिस्टम तो अपने पास हमेशा बैकअप रहता है और अपने को फिर से इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता। तो ये है स्टार्ट। इसमें अपन लोग थोड़ा मशीन्स करप्ट पर्पसली भी करने वाले हैं। बाद में जब अपन डीमन कमांड्स में आते हैं, जब अपने को उसकी वो दिखाता हूँ मैं। अभी अपन लोग डेमन कमांड्स नहीं कर रही, तो डेमन्स में जब आए वक्त अपन लोग उसको कर सकते हैं। तो एज एवरीडे क्लास आज भी कुछ ना कुछ मैं थियोरी दिखाने वाला हूँ। तो फॉर स्टार्टर्स, जब मैं बेसिक कमांड्स बोल रहा हूँ तो अलाउ टू शेयर, कैंसिल, ओके, शेयर स्क्रीन, अलाउ टू शेयर स्क्रीन। तो जैसा मैं रोज़ यस्टरडे भी कर रहा था, मैं आज भी इंशाल्लाह अपने को थियोरी पे जाने वाले हैं। स्क्रीन आ रही सो कंफर्म आप लोग कर सकते क्या? मैसेजेस में ज़रा स्क्रीन आ रही तो कंफर्म कर दिया मेरे को। मैं यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर भी, ओके गुड। मेरे को ज़रा मेरे साइड पे भी एक वॉल्यूम बूस्टर लगाना है। नो प्लस, ओके क्लोज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स कंटिन्यू। तो कल के रिकॉर्डिंग में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी एक्स्ट्रा वॉइस के एनी इंस्टॉलेशन। कल की क्लास में आप तो मौजूद थे, तो कल की क्लास में अपन लोग जो इंस्टॉलेशंस करें अपने को उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज कल की क्लास से अपन लोग, कल की क्लास इसलिए मैं कर रहा था क्यों बोल के बोले तो जो चीज़ अपने को मेन है फॉर राइट नाउ अपन लोग वो इंस्टॉल कर लिए। और इंशाल्लाह ये जो कमांड्स है अपन लोग रोज़ रिवाइज करने वाले हैं और इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट भी देने वाला हूँ इसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's just get into theory. As always, for theory, we will be using auto draw. Okay, first thing, this is our Linux system, suppose. Okay, in our Linux system, we are, this is us, this is our laptop, this is our computer, this is us, this keyboard, mouse. So, in our computer, even in Windows computers, even in Mac computers, even in Linux computers, अपने पास एक चीज़ रहती, this is called directories. Okay, so these are directories. तो directories का काम क्या करता है? Directories like if I, so in directories we have a directory. Okay, type over here, directory. Directory रहती है, directory is a fancy way of saying folder. Okay, तो what is directories? Directories is a fancier way of saying this is our file system. तो अपने पास जैसा कि अब यहाँ पर अगर मैं मेरे मेन विंडो पे आया, यहाँ पर में आप नोटिस कर सकते हैं कि मल्टीपल फोल्डर्स हैं। अनटाइटल्ड फोल्डर, पाइथन, अनटाइटल्ड फोल्डर 3, आइसक्रीम मेकर, मेक योर ओन बर्गर। तो इसमें क्या है, अपन लोग ये फोल्डर्स खोल सकते हैं, फोल्डर्स के फाइल व्यू कर सकते हैं, फोल्डर में अगर इमेजेस रहे वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये खोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं अपन लोग अंदर के फाइल्स खोल सकते हैं, फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अब script.js खोल रहा हूँ मैं अभी राइट ना, आपको ये पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने फाइल है, मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फाइल सिस्टम। ओके, तो इसमें फाइल सिस्टम में अपने पास फाइल्स भी रहते हैं एंड दिस इज, देर इज़ ए सर्टन वे ऑफ हाउ दिस इज स्ट्रक्चर्ड। तो दिस इज़ आवर मेन डायरेक्टरी। ओके, so this is your main directory, c:/. this is your main directory. अब मैं ये क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ? इन विंडोज दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन डायरेक्टरी, इन लिनक्स दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन डायरेक्टरी। सो इन
इन फॉर विंडोज अपने पास क्या रहता है, C:// के बाद अपने पास ये यूजुअली डायरेक्टरी रहती, सच एज find the eraser option. So in C we will have the directory. Suppose C we have the user के अंदर, फिर उसके बाद अपना पास C के अंदर यूजर्स रहती है, तो 1 सेकंड इसको मोर फीजिबल एरिया पे मूव करेंगे अपन लोग। तो अपने पास कैसा रहता ये, दिस इज आवर विंडोज सिस्टम, so we are all running windows, right? तो we have capital C:// then अपने पास क्या रहता बोल के बोले तो, so we have C:// then we have the folder, यहाँ पर से अपने डायरेक्टरी शुरू होते हैं। फर्स्ट फोल्डर यूजुअली क्या रहता है, अगर अपन लोग एक न्यू फाइल बनाए डेस्कटॉप पे, ओके तो दिस इज आवर डेस्कटॉप, this is our desktop. In our desktop we have made a file, okay, in our desktop we have made a file, and this file is called important.txt, and this is in our what directory, desktop. तो इसकी this is what we call a path. तो a path is like an address, right? C:// उसकी कंट्री है, क्या बोले तो अपने पास ड्राइव्स, अपने पास इन विंडोज वी हैव the availability to make partitions, and अपन लोग partitions में अपने पास C रहता, E रहता, D रहता, F रहता, जितने बोले अपन लोग उतने partitions बना सकते हैं। और partitions के अंदर क्या करते हैं, we can store in different data। मैं partitions के ऊपर ज़्यादा focus नहीं करने वाला हूँ। For right now we can just worry that C is our world, C is the world, okay। अपने को in the world we have a small section called users, and users के अंदर this is our list of countries, और या users is our list of countries। और अपने को कौन सा कंट्री में जाना है, C user, सपोज अपने यूजर नेम का नाम, यूजर का नाम है आजम, so C user/आजम। फिर अपने पास आजम/ अपने पास आजम के अंदर डेस्कटॉप रहता, तो दिस इज आवर, सो फार वी हैव द C कंट्री लिस्ट, कंट्री स्टेट, so desktop। So this is how it works. तो C user आजम desktop, फिर desktop is kind of like this city, क्या को बोले तो desktop रहता, अलग अलग चीज़ें रहते desktop। फिर उसके बाद desktop के अंदर क्या है बोल के बोले तो अपना important.txt, this is the important.txt। this is the important.txt। any questions? Any questions, please place in chat. I will be more than happy to answer. Again, मेरे को जब मैं क्लास करते रहता हूँ मेरे को ये चैट पेज नहीं दिखाता, तो जब मैं एवरी टाइम जब मैं रूटीन चेक करते रहता हूँ ये चैट विंडो को, तो मेरे को दिखते। अगर आपको लाइक इमीडिएट क्वेश्चन है और आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप माइक खोल के क्वेश्चन पूछ लें। तो any questions right now? Okay, let's continue. So in AutoDraw अपन लोग यहाँ पर ये अब तक ये बनाए हुए थे, तो अब मैं ये डिलीट करता हूँ। So now I will show the file system structure. So a file system is structured in this way. So अपन लोग Linux डाउनलोड करें, like here we have downloaded Linux। Okay, यहाँ पर इच करप्ट हो गया, देखो मेरा, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। अब मेरे को इसको कैसा करना पड़ता। ओके, नाउ आई विल आल्सो शो दिस हेल्प error please switch graph is vmw hypervisor। okay, so what we have to do, come here, hit X and power off। sometimes मैं ट्राई करता हूँ कि इसको फिर से खोल लेना, तो कभी चल जाता, तो let's try that। if not, likely this machine has been corrupted, in which case we will delete
and we will just spawn a new machine. So it's starting. So this is what happens usually. ये बहुत really common है, ये जो क्रैशिंग का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए थोड़े लोग इसको मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से अवॉइड करते. मैं भी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को सेट करा था एक बार कैली लिनक्स को, और एक बार क्रैश भी हो गया था मेरे मेन कंप्यूटर पे, तो प्रॉब्लम हुआ. See, it will show until here. See, okay, now it's fine. Fix हो गया. So instead of always deleting, always just try to reboot. Rebooting usually works. So for right now, I'm not going to log in. So this is the page we were on. The way this works is first we will have the main directory. Okay, so this is our main directory. So we have the slash. Slash के अंदर अब अपने पास क्या क्या रहता? We have, so slash is, we will box this. Okay, in that slash we will have more directories. So in here, this is going to be our indented directory. बोले तो this is our ये slash के अंदर रहे तो अपन लोग वैसा करते. So in slash we can have another box such as root. Okay, so let's write this R O O T. Okay, root. Please don't mind my handwriting. माउस से करना पड़ा तो इसलिए थोड़ा रीडिंग में मसला होगा. तो रूट है, रूट के अंदर अपने पास और एक फाइल है. सपोज रूट के अंदर, तो जब अपन लोग CTFs करने वाले हैं, रूट के अंदर एक फाइल रहेगा यूजुअली, और दिस फाइल का नाम रहता flag.txt सपोज. तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक हाउ दिस वर्क्स. ओके, फिर अपने पास flag.txt के बाद और एक फाइल रह सकता. दिस इज कॉल्ड note_to_self.txt, password.txt. ये ऐसा रहता. Then you can just separate this like so. So this is how file systems are structured. Of course, there are going to be more folders. We won't just have root. And yeah, let's get started with actual practice, considering that we have. So today is going to be a fun class, क्योंकि बोले तो अपने को आज कुछ commands मालूम होने वाले हैं जो I will actually list out right here. First command. So here we need to learn how to. Today we are going to learn how to list files in a folder. Make folders. Make files. Edit files. Edit files के अपने को actually 3 ways learn करने वाले हैं अपन लोग. और make files के 2 ways. Make files can be 3 ways actually. So for make files it will be 4 ways because we also have Vim. Make files, edit files, then we have change current folder, view what folder we are in, and yeah, that should be about it. We should, so right now as I listed all of these are just some of the commands we are going to be doing. We will be doing more. Okay, so everyone, the default password has been used. You can, अपन लोग चाहे तो बदल सकते हैं इसको. I don't recommend it. कई को बोले तो अपन लोग कुछ important तो करने वाले नहीं है इसमें, और मैं इसलिए मत बदलो बोल रहा हूँ. क्यों बोले तो जब आप बदले यहाँ पर नहीं लिखे हुआ रहता, तो it might get lost in the process. So I'm just gonna run this. So if you guys notice, मेरे को originally ये system नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करा बोल के बोले तो it was just stuck on the blue screen. If it's stuck on the blue screen for you guys, just
exit full screen, then go back into full screen. And in your virtual machine, you will also have your web browser. So in the virtual machine, you will have Firefox. Let's open the terminal. Okay, so to zoom in, you will use Control and Shift and then plus. So Control Shift plus until आपके desired हो गया. अगर over चलेगा, suppose मैं इतना कर दिया गलती से, and we can barely write anything here. I can just do Control with the minus button, and आप दबा के भी hold कर ले सकते हैं इसको. So I'm going to set it to right there. That's fine. रीडिंग की कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो इन्फॉर्म कर दिए. I want to actually do this. Okay. So I have also made some extra fun command list. Okay. I want to actually cat that. Okay. Clear. So first of all, let's get started with the more important commands. First command अपने को क्या करना है. वी आर जब भी अपन लोग टर्मिनल खोले तो आपको ये एक स्क्विगली लाइन दिखता. ये स्क्विगली लाइन का द सिंबल दिस इज कॉल्ड ए टिल्डा. दिस इज अ टिल्डा सिंबल. ओके. नाउ दिस टिल्डा इज व्हाट इट मींस बाय होम. तो अगर ये डायरेक्टरी में है तो अपन लोग ये यूजर के होम डायरेक्टरी में है. नाउ व्हाट इज अ होम डायरेक्टरी यू माइट आस्क. होम डायरेक्टरी इज ऑलवेज स्लैश home slash username. तो अपना username क्या ली है तो it will this user's home directory will be slash home slash Kali. Now if I write the first command pwd, we will see that this is indeed home.kali. So what is pwd? Pwd is the short command. तो ये excuse me, ये command का short form ये है print working directory. Now if you write it out like this, it will not actually print out the working directory, it will just print out working directory. It's like the echo command. So like we can say print hi, it will say hi. We can say echo hi and it will also say hi. And then so we have understood this pwd command. So if we relate this to what we did with directories, all this is basically saying is that we are in a certain directory. So we are in this, so we are, that is, excuse me, that is saying that we are in the slash home slash Kali directory. तो अपन ये command से after a while you won't really use the pwd command because जब भी अपन लोग ये टिल्डा देख लिए तो ये एड्रेस में रहे, ये उसमें है मालूम हो जाता. और when you're not in this directory it will just show home and like that. Okay, so अभी आप मेरे को कमांड डालते से देखिए this command is used for change in directories. Okay, so if we press cd, write cd, this we can do some commands. Okay, we can say cd dot cd clear, cd dot so cd dot क्या करता बोल के बोले तो it will exit you out of the current directory. तो अपन लोग suppose, so let me go back to autodraw. So suppose this is our terminal. Okay, dollar sign slash home slash Kali. No, it is dollar sign Kali at Kali. So this is your terminal and then this will be where you are right now. So we are currently in this. So
this is going to be our terminal. So if I write pwd over here and then press enter, it will press say /home/Kali. Now what I do, okay, is I run the cd dot command. What will it do? It will just do nothing. It won't print anything. It will look like it did nothing, but if you check this, it will be go from there to /home. And if you check the pwd over here, it will be /home. So the reason we won't really use pwd a lot when we are in the later command section, we will know that when we see this is the user's directory. So this left part is the user. So if I switch myself to the root user, don't worry about this part right now. If I switch myself to the root user, the left part is the username, and then the right part is this, and yeah. So cd, so sudo su again, su Kali, clear. So we are in the Kali directory. और मैं और एक कमांड दिखाया तो अपन लोग /home में है ना. If I write cd, then we go back to home. So after we write the cd command, the cd command's main job is to switch directories into back into home directories. Another way we can do this is we can write cd. So let's go back to cd dot. अपन लोग cd में है ना, अपन लोग relative directory. So अब मैं थोड़ा confusing होगा यार. अपन लोग relative directory का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि relative directory क्या रह सकती है अपनी right now पूछेंगे आप. relative directory as in अपने ये current directory में जो भी folders है अपन लोग उसका नाम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं. So such as अपन लोग /home में है /Kali लिख सकते हैं, या अपन लोग path लिख सकते हैं उसकी. तो full path, तो अपना path अपने को cd/ लिखे तो we are in this directory, and if I write pwd, this is the furthest we can go. इससे अपन लोग cd dot / के बाहर नहीं निकल सकते. Simple words. तो what we are saying is cd dot, so we can keep saying cd dot to exit. तो अपन लोग cd करा, तो यहाँ पर अगर अपन लोग cd dot लिखे, फिर से cd dot लिखे, cd dot, we get to the /. Now अब अपने को, let's go back here. We can do this faster by just writing cd and then writing /. It will eliminate lots of work. And what I mean by relative directory name is अपन लोग / से, so अपन लोग /home में है, right? We can write cd /var. तो ये क्या करने वाला है, var is also a directory, var is for variable. तो if we go to cd /var, अपन लोग /home में से भी /var जा सकते हैं. /var is just another directory for some data. There will be some things here, and we'll also see the www thing. Clear. So that might have gotten a little confusing. तो अब तक अपन लोग दो कमांड्स डिस्कस करें, pwd एंड cd. तो अपन लोग cd कहीं से भी कहीं पे कर सकते हैं. तो अपन लोग चाहे तो फुल कमांड यहाँ से फुल पाथ लिख सकते हैं. cd it will be dot / to get to /, then we can say home /Kali, or okay, I have मैं cd ऑलरेडी लिख दिया था. तो अपने पास cd /var से अपन लोग cd dot /home /Kali भी लिख सकते थे to get us directly into the /Kali directory. So with all that said, any questions? Does anyone have any questions? और मेरे पास भी एक क्वेश्चन है सबके लिए. आप लोग सब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? लाइक एज आई डू इट, इधर एज आई डू इट आप प्रैक्टिस करिए, या आप
वीडियो रिकॉर्डिंग देख के भी प्रैक्टिस कर सकते, अप टू यू। लेकिन अगेन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप देखते गए बस अभी साइड में प्रैक्टिस करना। तो anyone have any questions for this two commands, or is everyone else perfectly fine? As in perfectly fine as in you don't need any new help with any commands. Why are we using these commands? Good question. तो अपन लोग ये commands इसलिए use करते हैं ताकि अपन लोग file what do you call it, the file directory, the file system traverse करने के commands use करते हैं. We use it to get to places. So these commands are like a car, like almost like a necessity. अपने को you can manually do this by just opening the terminal in that specific directory. लेकिन अपन लोग ये commands इसलिए use करते हैं ताकि अपन को from point A to point B अपन लोग जा सकते हैं. Kind of like the purpose of a car. Any other questions? What do you mean by point A to point B? Point A as in अपने को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के कमांड्स यूज कर रहे हैं अपन लोग, और थोड़े कमांड्स हैं अपने को काम में आने वाले हैं. तो इफ आई गो बैक इनटू ऑटो ड्रॉ, क्वेश्चंस आप अभी भी लिखिए. मैं क्या बोला था कमांड जी? ओके, तो नेवर माइंड, थोड़ा बहुत मसला हो गया. नो प्रॉब्लम्स, आई जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दिस. तो मैं लिखा था, थोड़े कमांड्स लिखा था मैं यहाँ पर, आई फॉरगॉट, आई डिलीटेड देम. So we had a list of commands that we had to do. We had a command to change directory, see what directory we are in, and so these two commands I've done. I want to see, मेरे को ये देखना है कि अगर आप लोग के पास इसमें सवाल है क्या कुछ भी कहीं को बोले तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रह सकता है. Okay, next command. This command is, so we have done pwd cd. These are two commands that are very important. अपने को pwd उतना important नहीं है लेकिन cd उतना important है. Next command is ls. ls command is used to list the contents. So suppose, again back to autodraw, अपन लोग, as my example stated, if you are in the slash home folder, okay, अपन लोग slash home folder में है. What we are trying to do when we write ls is see what is inside the home folder. तो home folder के अंदर क्या क्या रह सकता है? We will have the desktop, we will have the media, music, videos, photos, games, files. Yeah, so this is what we will have. So we'll have the desktop, media, things like that. जब अपन लोग slash home में ls कर रहे हैं, right? So when I do ls in slash home, then these two things combined will give us an output of this, giving us the data. Now if I were to do it in any other directory, such as something not home but like var, the output will be different. Such as right now, as in if I do ls, we will see these things. But if I do it in so if I go cd slash var, if I write ls, we can see the things inside of the var directory. Now in here there are some switches. Okay, every command has switches. Switches as in there are some options which we can toggle. I don't want to go over them right now because I think they will be a consumer of our time, because we only have some good 20 minutes left.
So what I will instead do is I will go over more commands, and I will hope that you guys are making notes of these. So we have cd, so far we've gone over pwd, cd, and ls. So these are 3 commands that we have gone over. This is also important. So the way file systems are structured is you can do slash any directory, and you can do dot slash to get out of a directory. So if I do dot slash, it will take me to home, cd Cali. And you also have the option of autocomplete, which wasn't a thing back when I started, but if I do cd and then press tab, it can autocomplete to some certain directories. So if I do desktop, it will autocomplete to desktop. It's pretty handy. अपने को एक टाइम के बाद हर चीज़ लिखना थोड़ा वो नहीं होता. And if I check processes, we have ZSH in process. So these are some commands. So we also have another command called process. So process is used for checking processes. So the way this works, I did SH, ZSH, yes. So now if you see, we have 2 processes. So we can, I think there's an option, so ps/h. So these are switches. So if I do ps, so we have ZSH. तो ZSH is our current terminal. Okay, तो अपन लोग right now ZSH में है. तो मैं गलती से फिर यहाँ पर SH लिख दिया, तो इन्हें SH ले लिया. तो फिर मैं ZSH करा, तो it will bring me back to ZSH. So if I do Control Z, or sorry, I can run a command. So like cat, what is a really long file? cat/etc/shadow. cat/etc/password. That's pretty small. Cat. What can I do? Oh, we can run Wi-Fi. Don't worry about this command. So I'm running Wi-Fi to. So let's just do this. So sudo Wi-Fi, just to show you how we can suspend processes. Shoot. Why is it not letting me suspend? It's Control C to exit. So PS. So it's Control C to exit, and it's Control Z to suspend. I'll show you on my main computer if this works. So if we run a command that takes up a really long spot, okay, I'll show it in a later time. So when we suspend something, it will still be running, and it will take some time. So I can suspend SSH. So SSH. So I'm just doing this. And then if I do Control Z, so it says ZSH suspended SSH. Suspended just means that it's still running. So we can see that we have SSH running. Okay, so those are some commands. So as I said, I also want to get into the fun commands. So clear. Okay, so what I mean by fun commands is they're just cool ways of displaying things. I want to get back to the meeting. Installing Linux in Mac and Windows is the same. Yes, it is the same in Windows and Mac. There aren't any other explicit permissions that you have to give. But yeah, that's about it. There isn't a difference at all. And we have around 26 minutes. So we're fine. Okay, so अपन लोग अब तक ये करें कि we can find what directory we're in. We can cd to certain directories. You can cd to a directory. You can ls to view directories, things in directories, and then we can also. Okay, now I want to get into viewing files. Okay, because from my perspective, I think अपन लोग main
चीज़ें cover कर लिए. We also covered processes, even though I didn't really want to do that. PS dash H, shit, Control Z, PS dash Q SSH. So dash A. So this is these are what switches are. They help us view some things, and we can use kill SSH. Okay, so if I see PS, तो PID इसका 11625 है. अपन लोग इसको कॉपी कर लिए तो kill 11625. What? Kill 11625 and then press enter. Oh, sorry, it picked up SSH before that. So what killed that? Kill matlab it will just close that. If I check PS, okay. Why is that still up? I think it's sudo kill 11625. Hit enter. ls ps. Okay, no problem. Why? I don't know why that's not working. And we also have systemctl. Systemctl is to control daemons. So what daemons are is they are like services. तो अपने Windows में अपने पास एक section रहता जो पूरे services control करता. That is basically what systemctl does. So in the systemctl we can start and stop. So we can do start, stop, restart, things like that. So that's not for processes, but that is for service and daemons. So we will have certain daemons that we can turn off and on. We can also jam our system with this, but that's for a later class. So we are here. First thing we will do is, so for today, I'm also going to go over some more commands. We have another thing called nano. So nano is like a फाइल एडिटर. तो अपने को फाइल्स जो एडिट करना पड़ता है तो अपन लोग नैनो यूज़ करते हैं. तो अपन लोग नैनो से एक फ़ाइल बनेंगे. नैनो का फाइल नेम क्या रखेंगे बल्कि बोले तो नैनो के बाद अपन लोग फाइल नेम डालते हैं कि उन्हें इधर वो जो एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करता है या न्यू फाइल बना के उसको एडिट कर सकते हैं अपन लोग. तो अपन लोग नैनो बोल के अपन लोग एक फ़ाइल बनाएंगे आई लाइक टर्टल. ओके, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे आई लाइक टर्टल्स, कंट्रोल एक्स वाई एंटर. तो दैट वॉज वेरी फास्ट. तो अपने को बेसिकली कंट्रोल एक्स करना पड़ता फर्स्ट. So let me just do that again. Nano, I like turtle. Now here, if you see, we can edit the file. So I can say nano, I like turtles, and I can say here, I can come here and I say I love turtles. You can do whatever. Okay, I can add an exclamation point at the end. And then here what we do is, in the bottom there will be a list of commands we can do. There will be a list of commands. Here I'm going to say control X to exit. And then saved modified buffer is just fancy speak for saying, do you want to save your changes? We will always write Y for yes. And then this is your file name to write. So here we can always make a new file instead of just saving it to I like turtles. You can say I like turtles instead of I like turtle. So I like turtle, and then we can just write enter to create a new to save that. And we can use cat. So cat is short for concatenate. I don't know if I spelled that right. And we can say cat for I like turtlet. स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ. तो कैट आई लाइक टर्टल्स. तो अपने को क्या लिखता, अपने जो कमांड ये जो फाइल के अंदर जो था अपने को वो दिख रहा था.
Any questions? Okay, so should I do this? I want to try this. Figlet hello. Awesome. Is it a file name? I like turtle. Yeah, so this is getting kind of confusing now. I will make a new file. So yes, so this is the file name. Okay, so if I make a nano hello.txt, and then here this is where we can edit, and here we can say hi, my name is Azam, and then control X Y, enter, clear, and then here what I can say is I can नैनो इट, तो अपन लोग नैनो लिख के hello डॉट टी लिखे तो वो फाइल अपने को फिर से दिखाता, और अगर अपन लोग कैट लिख के वो फाइल का नाम लिखे जैसा कि hello डॉट टी it will say the output and it will say the contents of hello.txt. I hope that answered your question. What if a file .txt has like thousands of words? So अभी भी बताता हूँ. ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूँ. Just don't worry about this part. cd slash ls cd logs ls. No, there is no logs folder. Sys shoot ls dev, and then so this is an example of a really big file. So it will continue to output until either we stop it from outputting or it gets tired of outputting, or it finishes the output. तो ये बहुत बड़ी फाइल है, and we can just do Control C to quit. So we just write Control C to quit. So if I write commands now, that's how it works. Did that answer your question? Yeah. Okay. Any other questions? और कुछ भी questions है आपको या किसी और को? Okay. Okay, so this is our fun command, so we can say this is Figlet. So Figlet just generates a blob of text. So I can write Figlet hello. I want to see if this works. nf.txt. Okay, cd slash root cd slash, and then our Figlet command, and then ls. Okay, we have an nf.txt. We can say cat nf.txt. Okay, that works. So basically what Figlet is Figlet is a command for creating designs with words. Figlet, we can write quotation marks. So like if you have done a if you have experience in a programming language prior, quotation marks से अपन लोग strings write कर सकते. We can write my name is Azam to create an ASCII art kind of. So we get a full output called my name is Azam. So for कल की या आज का असाइनमेंट बोल सकता हूँ मैं, ये व्हाट्सएप चैनल पे भी लिख के डाल देता हूँ मैं. फॉर टुडेज असाइनमेंट सो टू स्पीक, आपको एक फाइल बनाना है. So what I need you to do is I need to see a nano command to create a file. Okay, तो nano जैसा कि मैं अब hello.txt है मेरे पास, तो command page में, so let me just clear this. So what you will say is in your screenshot you will have a nano of your file name. So the file name could be anything. So hello.txt,
ऐसा फाइल बना ऐसा देखना, और फाइल के अंदर आपका नाम लिख देना. सो लाइक हाय माय नेम इज आजम, कंट्रोल एक्स वाई एंटर. तो ये अपना फाइल रहेगा. फिर उसके नीचे आपको कैट hello.txt देखना है मेरे को. फिर उसके बाद अपने को फिगलेट डॉट स्लैश, आई थिंक अपन लोग hello.txt को, या तो वी नीड टू जस्ट, आपको फिर उसके बाद क्या करना है, यूज द फिगलेट कमांड टू क्रिएट a डिज़ाइन of let's say you need to use quotation marks to write my name is, and then your name. So for me it's just my name is Azam. Ending का एक quote लिख देके hit enter to get this kind of design. So I hope you understand this. आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है क्लास. Inshallah tomorrow we will continue with some more content. तो I hope everyone enjoyed today's session. इंशाल्लाह अपन लोग कल जैसा मैं बोला वो करने वाले हैं. तो As जी before बोलिए. proceeding, you said we have three methods of editing, three ways यस, of editing the file. आई विल गो ओवर दैट Mm, टुमारो. क्यों बोल के बोले okay. तो अब टाइम एंड होने वाला है, तो अपने को वो तो नहीं होना. लेकिन द 3 मेथड्स आर, सो क्रिएशन के लिए अपने पास टच रहता. तो फॉर क्रिएशन वी कैन यूज टच, कैट, vi and nano. Touch creates empty files, okay, and for editing we can use cat, vi and nano. okay, टुमारो मैं कल इसको यूसेज पे जाने वाला हूँ. तो कल और बहुत कमांड्स करने वाले हैं अपन लोग. तो इंशाल्लाह कल भी क्लास आप ज्वाइन करिए ताकि अपन लोग इसके ओवर जा सके. तो इंशाल्लाह वैसा रहने वाला है. तो आज के लिए बस इतना ही. अर्श अहमद साहब का एक क्वेश्चन है, डू वी हैव क्लास टुमारो? नो, नॉट टुमारो, वी हैव क्लास आई थिंक फ्रॉम वेंसडे वी विल रिज्यूम, बिकॉज मेरे को मंडे ट्यूसडे दावत है. तो आई थिंक इफ़ आई हैव टाइम मैं ट्यूसडे के दिन भी करूँगा, लेकिन टाइम नहीं रहा तो मेरे को वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा. Not on तो weekend. वीकेंड पे नहीं रहेगा, तो कल नहीं, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेंसडे. ओके, मेरे को ये कल और मंडे ट्यूसडे दावत रहने वाले हैं. तो वेन एवर आई से कल ड्यूरिंग फ्राइडे, आप समझ जाना कि आई मीन मंडे, कभी कंफ्यूज हो जाता मैं भी. तो विद दैट्स दैट, अदर क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप डाल दे सकते हैं. क्यों बोल के बोला, तो अभी 12 मिनट्स है मीटिंग ऑटोमेटिक एंड होने. ओके, नथिंग. तो इंशाल्लाह आज के लिए ये बस है. कल अपन कल एज इन वेंसडे के दिन अपन लोग इंशाल्लाह एडवांस्ड फाइल एडिटिंग और फाइल क्रिएशन पे जाएंगे. और आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.